Hello and welcome back to my channel. This is Hansini, and in this video I'm going to talk about the documents that are required for an application to study abroad. So let's just get into the video. So the first and the very important thing is your passport. Obviously it is like your identity proof, internationally acceptable. What actually happened with my passport is like मैंने अपना वेबसाइट पे जो भी लॉगिन वगैरह होता है आई डिड दैट एंड आई गॉट एन अपॉइंटमेंट फॉर अ नॉर्मल प्रोसेस जो भी होता है, बट आई डिडंट नो दैट द नॉर्मल प्रोसेस टेक्स अप टू लाइक 25 to 30 days. So I was in a rush to get the offer letter. I wanted the unconditional offer letter. तो मैंने क्या किया, जो मेरी डेट थी, आई थिंक माई डेट वॉज लाइक 30th September. सो वॉट आई डिड वॉज मैंने दोबारा से एक अपॉइंटमेंट ली, दैट वॉज फॉर तत्काल, एंड आई थॉट कि मतलब वो वाली कैंसिल कर देती हूँ और तत्काल ले लेती हूँ. बट वॉट एक्चुअली हैपेंड इज मेरा भाई और मेरी सेम डेट पे अपॉइंटमेंट थी, एंड वेन आई विजिटेड द ब्रांच और मैंने उनको बोला कि मैंने तत्काल कर रखा है, सो कैन आई जस्ट शिफ्ट इट 30th September की अपनी पुरानी वाली जो अपॉइंटमेंट है उसको शिफ्ट करके तत्काल कर सकती हूँ. सो दे सेड हाँ आप कर सकते हो, बट आपने वो कैंसिल कर दिया है. तो आई वॉज लाइक ओ शिट, एंड द तत्काल डेट वॉज ऑल्सो नॉट लाइक बहुत पास की भी नहीं थी, काफी 10-15 दिन बाद की थी. तो आई वॉज लाइक आई वेस्टेड लाइक 3500 बिकॉज तत्काल इज फॉर 3500 एंड जो मैंने नॉर्मल प्रोसेस से दिया था वो 1500 दिया था. सो अगर मैं उसके ऊपर भी 2000 दे देती तो मेरा तत्काल हो जाता एंड आई वुड हैव गॉट माई पासपोर्ट अ लिटिल अर्ली. बट या एनीवेज अब हो चुका है जो भी होना था, एंड आई एक्चुअली गॉट माई पासपोर्ट प्रीटी मच ऑन टाइम. तो मतलब तत्काल से यू गेट योर पासपोर्ट विद इन 3 working days, तो दैट इज गुड. बट जस्ट लाइक टू मेक यू अवेयर अबाउट इट कि अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट भी लेते हो किसी पासपोर्ट की, तो यू कैन शिफ्ट इट टू तत्काल ब्रांच पे जाके उसी दिन आप विजिट करो. उनको एक एप्लीकेशन लिखना होता है कि यू नीड यू नीड इट थ्रू द तत्काल प्रोसेस, एंड वो आपको शिफ्ट कर देंगे तत्काल मोड पे. टर्म्स एंड कंडीशंस आर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हों एंड देयर इज नो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई नाम चेंज का इश्यू नहीं है. ओके सो कोई नाम चेंज का इश्यू नहीं है तो वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. सो कमिंग टू द academic documents, you require your 10th class mark sheet, your 12th class mark sheet, and all the mark sheets semester wise for your graduation. They might also ask for your provisional if you are not having a degree right now. I do not have my degree. I'll get my degree next year. So I submitted my provisional documents to the university and all the semester's mark sheet. And also this video is only for people who are going for masters, because I am in the process of masters. मेरे को भी masters का ही पता है, but if I get to know something about graduation के लिए like undergrad, तो I'll share that too. Yeah. So coming to the work experience, वैसे it is not important for you to have an experience for like a master's degree in Australia. मतलब university to university depend करता है, but usually universities do not ask for a work experience for master's program. MBA के लिए they might ask for experience, but for my course they were not asking for any experience, and they took my application on the basis of that I have no experience. Although मैंने एक्सपीरियंस लिया था, बट दैट वॉज ओनली फॉर 6 months, एंड ऑल्सो वो मेरी यूनिवर्सिटी और लाइक वर्क एक्सपीरियंस वॉज क्लैशिंग बिकॉज मैं अपना कॉलेज के साथ साथ जॉब कर रही थी. तो आई थॉट ऑफ नॉट शेयरिंग इट, तो आई डिडंट इंक्लूड दैट बिकॉज इट इज जस्ट अ 6 months experience that I have. तो आई थॉट देयर इज नो पॉइंट शेयरिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑन दैट बिकॉज वो कोई क्राइटेरिया होगा नहीं. So I went for no experience criteria. I was in a no experience criteria. But if you have an experience of 1 year or more, then they might ask for your salary slips, your bank statement for the salary account, and also few details about your employer, because they want to confirm whether you are working there or not. If you have left the job,
Then they might ask for the relieving letter and the final documents, FNF proof and all. I am not sure what are the different type of proof of relieving, but हाँ वो सब वो मांग सकते हैं. So coming to students who are not 2022 pass out and were not working, वो क्या proof show करेंगे? What will they show as their gap year? What I would suggest is you can show that you were preparing for an examination like CAT, GMAT, yeah, whatever you were doing the entire year. You can show like जो भी admit letter, हाँ, admit card, हाँ, sorry, जो भी admit card आता है through the university or through the CAT का जो site है, because I applied for CAT, तो मेरे पास वो admit letter है. तो अगर तुम लोग वो प्रिपेयर कर रहे थे तो वो एडमिट लेटर अटैच कर सकते हो, स्टेटिंग लाइक राइट एन एप्लीकेशन अबाउट द गैप ईयर दैट यू हैड. तो आई थिंक दे माइट कंसिडर इट फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक अभी ये सारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और तुम पढ़ रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे घर पे बैठ के, तो वो गैप ईयर काउंट होता है. बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ गैप ईयर, दैट इज यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. तो यू कैन लाइक जस्टिफाई दैट थ्रू दिस छोटे मोटे प्रूफ अबाउट योर एडमिट लेटर. एंड इवन इफ यू आर टेकिंग अ कोचिंग एंड ऑल, बैंक स्टेटमेंट शो कर दो. आई मीन आई एम नॉट pretty sure about if they will accept this, but you can try and write an application about it and they might consider it. So coming to the next document, it is your English proficiency test. Coming to the next document is your English proficiency test, which everyone who goes to abroad in any of the university वो देते ही हैं. Either they give IELTS, TOEFL, GRE, I am not aware about, I think there is Duolingo. तो I know these 4. I gave IELTS, तो मैंने वो अब मेरा जो भी रिपोर्ट कार्ड या whatever the IELTS स्कोर आता है वो मैंने यूनिवर्सिटी को शेयर किया था to get my unconditional letter. And सबके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं. फॉर लाइक IELTS it is 6.5, no band less than 6, and I'm not aware of any other test abhi because I only gave IELTS. Okay, and the last document that they might ask for is the financial documents, like the financial proof about whether you can give that fees or not. So iske liye I took an education loan. So if you guys want to know about the process of that education loan and what all were the things that are required to get, like to be eligible for an education loan, that I will be sharing a video on that separately. So comment down below and let me know if you're interested for that. And also if you're not like taking the education loan, then they might ask for your 1 or 2 years of ITR for your father, mother, whoever is sponsoring you for your education, and your bank statements for like 6 months or 3 months. I am not really sure because some universities ask for 3 months and some ask for 6 months. So like for a safer side, you can take like 6 months bank statement. If you have like any property or any other income that is coming like your rent and all, you can show that as well. And any ancestral property you have your documents for that. You can show that as a financial proof also. So I think I've covered it all. These are all the documents that you require in order to get an offer letter from the university. So I will be sharing a video on the entire process from like your choosing your college to the last process where you board your flight to the destination that you want. So if you want to know the entire process of how it works, then you need to wait for like a couple of weeks, because I am actually in the process of getting my COE. I don't have my COE yet, but once I have it, I will be applying for my visa. And उसके साथ के जितने भी process होते हैं for the visa, medicals, ये सारा मैं आपके साथ share करूँगी. And
at the end I will make a video from like how to start from scratch, so stay tuned for that. So yeah, I think that's all. Do like, share, subscribe, comment, all the good things कर दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ. And I'll see you next time. Bye.